देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन फिटनेस. एक जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं and then they click their pictures and they post it, and there are people जो सिर्फ पोस्ट करने के लिए जिम में आए हुए होते हैं. How do you feel or talk to those type of people in real life? First of all, the people who are coming just for clicking pictures or something like that are somehow too obsessed of the content and the timeline and everything. So I don't think so that they have time to connect with me. Yeah, that is my whole point. And the people who are like working out and posting and creating content are like my type of a people. Because दो चीजें एक साथ हो जाती. You create content, you do workout also. You know. Being in a fitness journey versus being a fitness influencer, how that turned out. हर इंसान की जिंदगी में ना एक मंडे आता है. वो मंडे जब वो ना फिर से अपना जिम, अपने फिटनेस, अपनी लाइफ पे वर्क करने की कोशिश करता है. वो बोलता ज़रूर है कि उसकी ज़िंदगी में वो मंडे आएगा, बट वो मंडे कभी आता नहीं है. फिर वो मंडे करते करते वो 1 तारीख का इंतज़ार करता है, फिर वो 1 तारीख से वो न्यू ईयर का इंतज़ार करता है, बट वो दिन कभी नहीं आता है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिटनेस बिकॉज आज के डेट पे आपको और पूरी दुनिया को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी फिटनेस होगी उतना ज़्यादा अच्छा आप अपना लाइफ जी सकेंगे. एंड इसी चीज़ को और समझने और समझाने के लिए आज हमारे गेस्ट आए हुए हैं हु इज एन फिटनेस इन्फ्लुएंसर. तो आज समझते हैं फिटनेस भरी कहानी उनकी जुबानी. सो वी हैव नम्रता चंद्राकर विद अस एंड आज समझते हैं कि फिटनेस कैसे वर्क करता है अपनी लाइफ में एंड कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है एंड मोटिवेट करती है कि व्हाई फिटनेस इज इंपॉर्टेंट. सो हेलो मैम, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट चैनल. Hi. सो मैं सबसे पहले आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, दैट इज हाउ डिड यू गेट इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री? Fitness industry is quite, hard term to use. Fitness journey, I could say. Okay. Fitness journey initially started from the year of 15, I guess, because 15 years mein I developed this passion on playing badminton. Okay. So I always got very hard coach. Ooh. Always. They made us train very hard. Okay. I mean, we had a school session in the morning, after that tuition, and then evening training time. So he used to call us 5 a.m. in the morning for running, and after that 5 a.m. in the evening for practices. And that is how we started this concept on going gym. Okay. When I was 15, I think so, उस टाइम पे भी इतनी सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में भी नहीं थी. Yeah. Because I never found a playing partner. I never, like, I have played my whole life majorly with guys. Now Okay. I can get. Okay. But earlier I wasn't getting a female partner to play around with. Okay. And eventually I did not develop that concept, to be very honest, because बचपन से जो सिखाओगे वो समझ में नहीं आता. मतलब you just get too used to it. It is very normal for you. So eventually when all this training and all this sessions are happening, वो मेरी habit ही बन गई. And I think so I got injury when I was in 12th. So ligament tear हो गया. उसके बाद मेरा फिटनेस का जर्नी कहीं ना कहीं रुक गया. And then I gained like 108. I was 108 kgs when I was in college. कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो बोल रही है कि ये एक टाइम पे 108 किलो की हुआ करती थी. क्या आपको लग रहा है कि ये कभी 108 की हुआ करती थी? No. I was, and I think so college time is very relaxed time. No? Yeah. So you just want to learn, be chill with your friends, Yeah. eat a lot of food, Yeah. junk food specify करके बोले तो. And I think so that was the time when I kept on gaining, and it just hit me hard in my final years that I got to know that was the year I realized that I have gained a lot of weight. That is the only year. I think the first 2 years were like very chill for me. Okay. There was new college, cool kids, everybody is just, nobody cares. Yeah. What you're doing in life. The final year is where you are supposed to go out in the industry, and then you realize yourself that what you have gained so much. So I realized that I have gained a lot of weight. Okay. And that is how I think the final year my college made up this commitment from us. They took a commitment from us that morning में session आने से पहले आपको gym जाना पड़ेगा. अच्छा. That was a huge commitment to give. Okay. And Okay. being a kid, I think so वहाँ से
एक seriousness towards the fitness started. Again, the 5 a.m. routine started there. Oh. Yeah, so it helped me. The 15-year-old me just reminded myself that you need to work hard, girl. I mean, if you're not working hard, you will be the kind of person which you don't like. Yeah. So yeah, that kept on going, and I think so. This journey is, for me, it's always been like learning it. Matlab, I learn something, I unlearn it, and then I learn again. Oh. Okay. Every year, every 3 to 6 months, every day, I would say, I'm learning, and I'm still learning, and I Okay. think so. I can be the student of this subject for my whole life, the Nice. rest of my life. Nice. So there was this post I saw on Instagram. Yeah. So there are 2 jars. एक जार पे ढक्कन लगा हुआ है and उस पे हाँ. कहा हुआ है कि मुझे सब पता है. Yeah. एंड दूसरे में वो ढक्कन नहीं है, वो खुला हुआ है एंड वो ऐसे मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जितना सिखाने सिखाओ. सो दैट्स द वे ऑफ लाइफ. आप Yeah. जितना ज्यादा सीखोगे, या एवरी टाइम दैट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर इज नो एज टू स्टॉप लर्निंग. Yeah. एवरी टाइम दैट यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू. मैं आज भी देयर हैव बीन टाइम्स मैं बहुत ऐसे लोगों से सीख लेता हूँ या ऐसी चीजें सीखता हूँ जो आज तक सोचा भी नहीं था कि इनसे मैं कुछ सीखूंगा. एंड यू गेट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो या इट्स वेरी नाइस कि दैट जो दरवाजा आपने खुला छोड़ा वो हाँ. कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन पे ले गया. ओके. And always there's a saying, I feel, the more you learn, the more beautiful this world becomes. Okay. You know, the more you see is how much you can beautify to your world as well. Okay. And I think so that the sense of acceptance that you don't know much is something very amazing. I mean, there's no stress, you know. You can be just chill. If you know something, you share. Yeah. You don't be arrogant in it. Yeah. And if you don't know, you'll get to know. Yeah. It's so simple. Yeah. And I think so it took time to realize that you need to be like this. Okay. Because I think so there's a what do you say, in our industry there's something ki why I love fitness is that nobody will, you know, judge you for where you are till Okay. now. Where Till are you now. are means? As in, whether you are fat, you're Okay. thin, you're very extreme fit, you're athlete, you are somebody, you know, too A film extreme. star. Yeah. A glamour Nobody industry. will judge you until unless you are putting the hardcore efforts in the field. Okay. I mean, Okay. malab, still now, whatever gym I go to here in Raipur or around the world or around the city, whenever I go, I make sure that I observe people, and there's a set. Like you need to share machines with every Yeah. person, right? So when the sets are going on, you just don't talk. You just say alternate. हाँ. ठीक है, तो हाँ. like this is the action you do. ठीक है. और उस टाइम पे जो भी पर्सन है ना आपके साथ जो वर्कआउट कर रहे हैं, दे सी यू, एंड भले मैं नहीं जानती हूँ उनको, they'll come and they'll correct me Oh. कि this is wrong because इससे इंजरी हो जाएगी. मतलब the nicest people you can find is in the gym. That is what I feel. Okay. Yeah. Okay. Nice. That is what I feel. Okay. So that is how my experience is going on so far. Okay. So like आज के डेट पे there are good experiences, there are bad experiences, but I Yeah. want to have a funny experience from your experience कि कोई आपने ऐसा इंसिडेंट फेस किया हो या देखा हो, क्योंकि जिम के कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो बहुत वायरल होते हैं. Yeah. तो ऐसा कोई फनी मोमेंट जो आपने लाइव देखा हो जिम में कभी या खुद एक्सपीरियंस किया हो? Okay, there are two incidents I would say. पहला तो ये है कि I'm a natural athlete. Like Okay. I don't consume anything Okay. artificial to you know, retain my muscles or something like that. So we have a phase. So when you are in a cutting phase, I have a huge bicep. Okay. Yeah, that is what people say. I have a huge bicep, and it is because, like I said, that I train a lot with the guys, ठीक है. and they do huge among us weights for the biceps, and it just made me do it too. Okay. So I have a huge bicep. So there was a time when I entered a new gym, and the manager called me up and said that, do you do drugs? Okay. Yeah, do you do drugs? And I was quite embarrassed, to be very honest, because that is my first day Okay. of the gym. Yeah. I've just entered and I'm doing workout. And how could you just say that you have done drugs? Hmm.
And I don't know, I just laughed. I'm like, thank you for saying that, first of all. क्योंकि naturally body maintain करना बहुत बड़ा science है. Yeah. And I'm thankful for my coaches. They make me understand कि अरे इस time पे carbs down करना है, इस time पे up करना है, इस time पे protein intake करना है, इस time पे नहीं करना है. So that is how we work out when we do workout. Yeah. And it just got spreading up in the gym. And every next person is coming and looking at me. They have been texting me on my Instagram. And it came through my family. And family actually sit with me and they asked me, like, do you do drugs too? This is so embarrassing. I'm so sorry. I don't do anything. Please talk to my coach. I'm very natural. You do test whatever. They Oh just my made God. me stop everything for a while. Okay. My sister she was very curious. Didi, have you done something to your body? I'm like, no. The cycle is, first of all, I don't believe in this kind of cycles. Of course, I respect jo bhi karta hai. I am not against it. It's just I'm not that kind of person. Okay. So this was the funniest story of my transformation. Nice. Yeah. Nice. And another one is when कुछ भी ट्रेंड आता है जिम को लेके एंड दे हैव दिस क्लीशे कंटेंट गोइंग ऑन कि अभी भी आई थिंक सो न्यू ईयर का टाइम है तो एवरीबडी विल बी हॉपिंग ऑन टू दैट ट्रेंड जहाँ पे the girl is like doing this and the guy comes and the heart shape thing, you know? So every next day I see that somehow in the corner of the gym somewhere. Okay. So that is very kind of funny, entertaining part of the gym. Okay. And since you are talking about content, so मुझे एक चीज समझना है, that is right now there are two types of people in fitness. Yeah. एक जो actual में workout करते हैं and then they click their pictures and they post it. Yeah. And there are people जो सिर्फ पोस्ट करने के लिए जिम में आए हुए होते हैं. So how do you feel or talk to those type of people in real life? So I think so. First of all, the people who are coming just for clicking pictures or something like that are somehow too obsessed of the content and the timeline and everything. So I don't think so that they have time to connect with me. Okay. Yeah, that is my whole point. And the people who are like working out and posting and creating content are like my type of a people. Okay. Because दो चीजें एक साथ हो जाती है. You create content, you do workout also. You know, so time management बहुत अच्छा हो जाता है. तो I'm that kind of person and I click with that kind of genre people because it is really easy for me to talk to them. And secondly, I think so when we are working out and when we are shooting also, we correct our forms as well. So that make sure गलत वीडियो ना जाए. No, not गलत वीडियो ना जाए. So our coaches are around the India, right? Yeah. So कहीं पे भी हैं वो. So for example, recent coaches in Chandigarh. Okay. तो they keep on asking everyday updates. So हम सेट्स करते हैं तो उनका एवरीडे अपडेट उनको जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि यार ये गलत किया, यहाँ पे मसल नहीं हिट हो रहा. सो दे इजीली जज अस. तो नेक्स्ट टाइम का जब रूटीन होता है ना तो वो करेक्ट हो जाता है बिकॉज एवरीडे नोट्स हम लिखते हैं. सो एवरीडे का जो वर्कआउट सेशन होता है हमारा, वी हैव अ स्केड्यूल एंड वी नोट एवरीथिंग डाउन कि इतना सेट हुआ, इतना मारा, इतना ऐसा किया, ये किया, वो किया. सो फॉर दैट वो माई कोच विल मेक श्योर कि इतना किया कि नहीं बिकॉज ही इज नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड मी. सो वीडियो रिकॉर्ड करने का ये भी फायदा हो जाता है कि मैं कंटेंट भी बना लेती हूँ, साथ में मैं कोच को भी भेज देती हूँ. दैट इज व्हाई. सो बीइंग इन अ फिटनेस जर्नी वर्सेस बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, how that turned out? Yeah. So for me, it was an unexpected journey. Okay. And I never really... So Insta for me, Facebook, all these things are for me. I like to record my journey. Because I know मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है वो इतना स्पेस नहीं होल्ड कर सकती है that it will give me, 2020 में कैसी थी मैं, 21 में कैसी थी and 24 में कैसी थी and like that. Yeah. So just रील का पैशन मेरा ऐसा हुआ कि I just started creating memory there. And eventually I made it public because मेरे को एक कॉन्फिडेंस आते गया धीरे धीरे. And it made me stand out a bit and boosted my confidence a lot. And I kept going. Nothing, like I did not put too much thought in it. Okay. I just enjoyed it, so I kept on going. And
I think so keep on doing it. Okay. So आपने एक शब्द यूज किया confidence. Yeah. So there are multiple people out there जिन्हें confidence नहीं आता to live their life to the fullest. ठीक है, जैसे अपन ने कन्वर्सेशन की शुरुआत ही वैसी हुई थी, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल, सबको अपना बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ आता कि आज के डेट पे कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, सबके अपने अपने अलग अलग फिगर्स हैं, ठीक है, बॉडी टाइप्स है. सो आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे जस्ट डोंट कम ऑनलाइन बिकॉज दे फील लिटिल अशेम्ड और दे फील लेस कॉन्फिडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज उन्हें बहुत सारा दबा देती है कह कह के कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम सुकड़े डंडी हो, मल्टीपल थिंग्स. तो वैसे टाइम पे इंसान को क्या करना चाहिए? I think so. Make sure that you are so much confident to see yourself in the mirror. Firstly, Okay. I think so. Once you are so much isolated or consumed in your own world, na, it doesn't matter who's saying what. Okay. And I feel even one person is supporting you na, around you. Yeah. Like whether it is your sibling, family, your lover, anybody. Yeah. It's enough. Okay. Okay. Because once I know this fact कि जर्नी अकेली नहीं होती है, कोई ना कोई चाहिए होता है, कोच चाहिए होता है, फ्रेंड चाहिए होता है, कि जब भी आपका डाउनफॉल हो तो कोई ना कोई खड़े रहे बोलने के लिए, अरे यार हो गया, चल ना करते हैं, like that. So I think so find that one person जिसमें you can rely on. For me it has been very grateful that I have got many Wow. अलग अलग सेक्शंस में जिनसे मैं बहुत डांट खाती हूँ and it keeps me grounded. Okay, so 2-3 नाम ऐसे जिनसे आप सबसे ज्यादा डांट खाते हैं? My father, my sister and then my coach. अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप ऐसे ने कैसे डांटते हैं. Okay, so जब हम बात करते हैं, आप जब एक खुद की जर्नी में जा रहे थे वर्सेस जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए, सो ऑब्वियसली जब आप चीज़ों को बता रहे होते हैं, क्योंकि एक होता है जब आपने लर्न किया और एक जब आप दूसरों को टीच कर रहे हो, सो देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. सो देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स कि आपने देखा होगा कुछ कंटेंट, यार ये बंदा टीच तो कर रहा है बट ये गलत टीच कर रहा है, दैट्स नॉट द राइट वे. वैसे टाइम पे आपका क्या रिएक्शंस होता है? So I would say this is very complicated because कुछ फॉर्म्स जो होते हैं ना अलग अलग बॉडी टाइप में, मतलब थोड़े से ना चेंज करने से ना सबकी बॉडी में अलग सूट इम्पैक्ट पड़ता है. Okay. So for example, when I'm doing bicep, I usually retract my shoulder back and I keep it very stiff so that I get the full range on my bicep. But for some people, they make sure that they are not retracting the shoulder, it is very loose, and then they get the pump easily. So I think so there's no right and wrong unless you are not disturbing the form of your body, the posture of your body, or you're not getting injured. Firstly, you need to understand कि आपका bicep, मतलब people have two different types of muscle. Okay, so हर एक muscle में जैसे you have double bicep, so एक यहाँ पे पंप होता है और यहाँ पे होता है. So very rare people have double bicep. So उनका जो workout position होता है वो बहुत अलग होता है. And then some people have only very smaller bicep. So उनका जो workout routine है अलग होता है. So उसके हिसाब से postures भी अलग हो जाते हैं. Yeah, sometimes something what people are showing on the internet doesn't work for me, but I can't really judge them. Because maybe हो सकता है उनका जो मसल का लेंथ है वो छोटा है, तो it is working for them. That is why they are sharing. अच्छा. तो I really don't judge until unless I am not sure. So I think so I see it and sometimes it just doesn't come to my head. You just skip it. Yeah. You just skip it. He's doing wrong or something like that. I just appreciate it because एट द एंड मैं भी कहीं ना कहीं उसी फेज में हूँ. सो अगर मैं जजमेंट्स उनके लिए डाल रही हूँ तो ऑफकोर्स थर्ड पर्सन आके मेरे लिए भी जजमेंट्स डाल के जाएगा एंड देन it is possible that it becomes a habit. So I avoid things which I just don't want to put it into my habit list. Nice. Yeah. Real nice. Okay. So अभी since दर्शकों हमारे साथ एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है and इन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ दर्शकों को कुछ फ्री टिप्स मिल जाए ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सुधर जाए. So ऐसे कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो उन्हें खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए so that they can live a healthy life? Okay. Firstly, I would say supplements मत करो. Okay.
very very honest opinion, and I think so. Please rely on Ayurvedics. Please, Ayurveda is something which gives us lot many things. I mean, like Jains, I just love how they live, to be very honest. Okay. Jains don't eat after 6. जैसे Okay. सनसेट हो हाँ, जाता yeah, है, yeah. they don't eat, बिकॉज हमारा बॉडी साइकिल ही वैसा बना हुआ है कि आफ्टर दैट आपका जो मोटाबलिज्म है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है, एंड यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, योर बॉडी इज डाउन, दैट इज व्हाई यू स्लीप इन द नाइट सो क्विकली. सो जो आपका बॉडी जैसे प्रोसेस हुआ है, जैसे नेचर के साथ है, जस्ट ट्राई टू अलाइन विद इट. ओके, You will be healthy. जैसे बनाया गया वैसे रहो. Yes, just don't put too much chemical in your body, because I think so. मेडिसिन इंडस्ट्री बहुत कमा रही है. ठीक है, बहुत बहुत कमा रही है. सॉरी आई एम सेइंग दिस आउट लाउड, बट इट इज ट्रू. जितना नेचुरल रखोगे उतना लॉन्ग टर्म तक आपका फिटनेस और हेल्थ, वो जो कमिटमेंट है ना, वो मेंटेन रहेगा. डोंट अवॉइड फूड जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि ये आपको वेट गेन कराता है, या लाइक इफ यू लाइक राइस, ईट राइस. Lot of people have this crazy assumption that rice is not good. We live in Chhattisgarh. Come on, we live in Chhattisgarh. हमारा जो digestion है, we can rely on rice like anything. Kerala are like, जो बोल सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ rice bowl of India है. हाँ, वैसे केरला है. Just see the process of your lifestyle. लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने जो टेस्ट है ना, उसको मेंटेन करके चलो, और नथिंग विल हैपन. आई थिंक सो बैलेंस द थिंग्स अप. डोंट ओवरडू एनीथिंग. ओवरडूइंग एनीथिंग इज हार्मफुल टू योर बॉडी. आई मीन, लाइक इफ यू लाइक पनीर, इफ यू कीप ऑन ईटिंग पनीर फॉर लाइक मॉर्निंग टिल द नाइट, क्या होगा आपका पेट का? तो सिंपल है कि थोड़े थोड़े पोर्शन में ऐड एवरीथिंग अप. अवॉइड आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स जितना हो सकता है उतना. एंड ऑल्सो प्लीज़, इंडिया बहुत ज़्यादा विटामिन डिफिशिएंसी में है. विटामिन डी नहीं है हमारे में. सो आई थिंक सो डोंट अवॉइड दैट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर ओल्ड एज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो yeah, these 2-3 things are there which you need to follow, and that's all. What is the 3 best staple food according to you? कौन से 3 ऐसे ingredients आप बोलोगे कि ये तो यार खा लेना चाहिए, ये this is good for? दही चावल is like love. I mean, you shouldn't avoid curd rice. Curd and rice is very good. Sambar is really good. And I think so dosa. Yeah, like fermented foods are too good. So these 2-3 dishes. Yeah, these 2 to 3 dishes are there which you should never avoid. I mean, eat. They are very tasty and they are very good for your gut. So मुझे एक हमेशा ना क्यूरियस क्वेश्चन रहा है. मैंने हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी फिटनेस वाले से पूछूं, बट आज आपसे पूछता हूँ. दैट इज यार, आप ऑब्वियसली आपको भी ट्रफल केक, पास्ता, पिज्जा, बर्गर ये सब पसंद होगा, चीज केक पसंद होगा. सो डू यू लाइक टेक अ स्मॉल बाइट एंड यू लाइक, हाँ हो गया मेरा काफी आज का, समथिंग लाइक दैट? Yeah, I do it and I get teased for it because especially I love cheesecake. Ouch. I just love it. I'm a sweet tooth, you can say. And मीठा मतलब एक्सट्रीम नहीं हूँ मैं, इतनी हूँ कि मैं बैलेंस कर सकती हूँ. बट when I want to eat it, I want to eat it. Like, I want to eat it with guilt free. So I make sure that whenever I'm eating, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन बैठा के कि अभी ये खा लिया है तो 10,000 से ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे. और मॉर्निंग वॉक में जब जाएगी तो 10 मिनट से 15 मिनट ज़्यादा चलना पड़ेगा. और ये सेट है तो इसका 3-4 सेट और ज़्यादा मारना पड़ेगा कि बर्नआउट बैलेंस हो जाए. Yeah, so I do that. And I still do it. And I'm not ashamed about it because I think so that makes... I'm a control freak, you can say. Like, I don't like to lose control. So if I have developed a habit, I like to maintain it. So that is the whole point कि मैं खाती हूँ. ऐसा नहीं है कि I avoid. But ऐसा है कि मैं हर दिन नहीं खा सकती. I'll eat maybe 15 days for 1 month में 1 बार 2 बार like that. And what about like ऐसे कोई तो फूड होंगे जो आप पहले बहुत खाया करते थे, but gradually वो बिरयानी.
I All think the so. You also biryani bought lovers a are biryani. मैं बेसिकली बिरयानी मतलब अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने ब्लिंकिट का नहीं जोमेटो का एक पोस्ट देखा था. सो 2025 में टोटल 1 crore 9 lakh समथिंग फिगर्स में नंबर ऑफ बिरयानी वर ऑर्डर्ड. So that is People like like me. The yeah. past people And like I am me. talking about stats of छत्तीसगढ़. Yeah, of course, I तो believe. 1 करोड़ बिरयानी सिर्फ छत्तीसगढ़ में कंज्यूम हुई थी. I believe, and no, like if you'll see the ventures of food, Yeah. biryani is बहुत खुल रही है. Yeah. Kilos by biryani and all that because, like I said, Chhattisgarh is fond of rice. Rice. And we are crazy about rice. So आपने राइस अब कम कर मतलब बिरयानी कम कर दिया है या फिर नहीं खाते? Okay, now my biryani is very different. Like I still make, now I won't call it biryani, I would call it a pulao or sorted, I don't know, boiled veggies, something like that. Okay. Yeah. So I still every day, it's a routine. So that I don't crave for it again. बिरयानी और आज मेरे मील पक्का बिरयानी ऑर्डर होने वाली है, मुझे फील आ चुका है. नहीं, बिरयानी और मेरे फूड में बस यही डिफरेंस है. एक तो मैं वाइट राइस अवॉइड करती हूँ, आई गो फॉर रेड राइस और मिलेट और समथिंग किनोआ, ये सारा चीज ऐड ऑन हो गया. बिरयानी का जो बेस होता है विच इज लॉट ऑफ स्पाइसेस, वो ऑमिट हो चुका है एंड आई हैव लॉट ऑफ वेजीज. इन शॉर्ट वो बिरयानी नहीं रहा. वो बिरयानी नहीं रहा, उसको इज्जत से आप पुलाव बोल दीजिए या राइस बोल दीजिए, फ्राइड राइस बोल दीजिए. तो माय सिस्टर कॉल इट उबला हुआ कुछ तो. इट इज उबला हुआ कुछ तो. she sees it and is like, how do you eat it? I'm like, I love it. Okay, I have this obsession about beetroot. Okay. I like the color of it. Okay. So it makes everything go red. Okay, so I like it because मैं जैसे जवार की रोटी खाती हूँ तो जवार की रोटी का कलर जो होता है वो बहुत ऑफ सा होता है. I don't like it. So I grate beetroot in it. Okay, so red color कर दिया. Everything. In everything, like in my brown rice also I put lot of beetroot. Okay. I have lot of drinks of beetroot, like I blend in a blender and I just drink it with the fiber. Okay. So I'm obsessed with beetroots and I think so it's really good for the women. Okay. So women should have 1 beetroot in a day at least. Okay. At least. और अगर नहीं पसंद है तो कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती खाना पड़ता है. तो I eat it, I put it in raita everywhere. Like beetroot is there in my diet. Okay. So मुझे एक बताना कि that is when it comes to fitness. Yeah. क्या fitness journey for men and women बहुत differ करती है या it's more of a same line? Nutrition aspects में देखें ठीक है. तो of course थोड़ा सा चेंज है, बट फिटनेस जर्नी मतलब डिसिप्लिन के बारे में बात कर, नथिंग इज डिफरेंट. ओके. एवरीबडी मेक अ ह्यूज फर्स की women protein and pea protein and all that. It is nothing like that. Okay. It's nothing. See, of course, the dynamics of male and females are different. So, of course, estrogen and testosterone level, these part makes it different. Yeah. Rather than that, food intake, nutrition level, सब same है. Workout level, सब same है. Okay. So I've seen like beast women, you know, and they are so amazing. They amaze me so well. It's just that I think so. There's no I don't find any difference in male female aspect. That is why I said that I work out with males. I say it very loudly. It's not like I don't have female girls who are. It just I think so. Males are so much confident. उनके दिमाग में बैठा ही होता है कि भैया हम 10 का डंबल नहीं उठाएंगे, हम तो 15 से चालू करेंगे. And I like that mindset. Okay. Because you are pushing yourself. You're not just being to 7.5, 5. No. You're going 15, 17.5, 20, 22, like that. Okay. So I found that kind of people around me who push me, yeah, kya 10 utha rahi hai, like that. Okay. That's a It's good not way. mocking. It's not teasing me. It's not something जो harass कर रहे हो. They are actually encouraging me कि यार नहीं मतलब ठीक है तेरा skip हो गया है ना, कोई बात नहीं, but फिर भी तू इधर से चालू कर. And eventually वो क्या होता है कि mindset जब brain is very complicated. बुद्धू सा है मेरे को ऐसा लगता है. Very बुद्धू सा ही है क्योंकि it is trained to keep you alive and safe. Yeah. Always. Yeah.
तो दैट इज वाई कहीं ना कहीं हम रिस्क लेने से डरते हैं कि यार 15 ले लिया, टूट गया हाथ तो ये हो गया, तो अरे यार करके देखो. Of course, do it sensibly. Don't be stupid. just understand the posture, understand your body type, Okay. and then do it. Okay. Push your body, and you like it because brain is like elastic. जितना ज़्यादा stretch करोगे वो उतना ज़्यादा हो जाता है. अच्छा. हाँ. So train your body and muscle like that. Like it's elastic, flexible बनाओ. Nice. So it's like पूरी ये journey जब चल रही है. हाँ. So what is that one quote or one line that has been motivated you to the fullest of your life? Oh, I can do anything. Do anything. Yeah. Okay. I like it. And there's a song which is like always stuck in my head and I always listen. First is Hanuman Chalisa. Okay. Always. My day, my gym starts with Hanuman Chalisa. I just love it. It just makes me calm Okay. and go crazy because it just so there's a pattern of a human, na? Like if I'm sitting here, I'm fully aware that I'm talking to you. Yeah. So if I switch immediately, मेरे को अगर यहाँ से उठा के आप बोलोगे ना चल पुशअप मार, हाँ. ठीक है, मैं पुशअप मार सकती हूँ ठीक है. क्योंकि मेरा जो यहाँ से वहाँ का स्विच है ना वो इजीली हो जाता है बिकॉज आई एम प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट एंड दैट सॉन्ग मेक्स मी फील मोर प्रेजेंटेबल. It's more of you have good clarity. Yeah. ये करना है फिर ये करना है. हाँ, ये पहले ये पूरा टास्क 1 घंटा 2 घंटा तुमको खत्म करना है, फिर 2 घंटे के बाद ये 1-2 घंटा ये करना है. मतलब प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में रहना है, पास्ट और फ्यूचर का नहीं सोचना है. या एंड आई थिंक सो वो कंसंट्रेशन ना बहुत अच्छा होता है. Okay. क्योंकि यू कैन रिलीज ऑल द स्ट्रेस, यू कैन जस्ट काम योर बॉडी, माइंड, मसल्स, एवरीथिंग एंड जस्ट यू लाइक आई थिंक सो वेरी फ्यू पीपल ऑब्जर्व दिस. फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक, ठीक है. 2 लाइन पढ़ने के बाद if your phone just ring or blinked or something happened, you'll take the phone, you'll start scrolling. Yeah. है ना, भले ही वो बुक पढ़ने के लिए 1 मिनट दिया होगा, Yeah. उसके नाम पे आप बैठ के 10 to 15 मिनट आराम से फोन में स्क्रॉल डाउन कर लेते हो. Yeah. So it is very easy to distract the mind. And I think so that distraction, if you'll cut down and you'll focus onto your body, yourself, your lookings, your presentation, I think so life becomes more easy to chill out with. Okay. Because I know I have this time to work out and after that this time to chill with friends. I don't have guilt. Okay. मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला. You know. End So of the that day is ये why. नहीं आएगा. I don't have a me life. Yeah. And I think so depression भी, ये depression word is very complicated, I feel. Okay. The people who are not working in themselves or their life or their journey, how they want to see themselves, get to this phase of depression. So I think so if you want to avoid this depression part like from your life completely, just start focusing on yourself, and one way of doing it is the fitness journey. Okay. Start your fitness journey. Of course for different people it is different, like somebody likes dancing, somebody likes yoga, something, but do something. Physical activity is much needed. Okay. Yeah. मैंने ना अभी एक स्टैट्स पढ़ा था कि पहले लोग 30-40 मिनट्स चला करते थे एंड द एवरेज टाइम इज रिड्यूस्ड टू 14-15 मिनट्स. Yeah. ये ऐसा कुछ रिड्यूस हुआ टू हाफ ऑफ द टोटल दैट पीपल यूज्ड टू डू इन Do बिफोर. it, yes. सो कहीं ना कहीं जहां हमारी लाइफस्टाइल खराब हो रही है विद जंक फूड, स्क्रीन टाइम, स्लीप टाइम, वाटर इनटेक एंड एवरीथिंग, जहां हमें बढ़ाना चाहिए था हम उसे Yeah. कम कर रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज का अवेयरनेस तो लोगों को है बस एक्सेप्टेंस नहीं है. नहीं है. Yes, नहीं है because I think social media is something जहाँ पे हम सोचते that हम पहले बोलते थे गूगल देवता, you know, now Insta, Facebook has become our mother father. I think because every kid, every Gen Z, you'll see either they are an influencer or doing something on the internet, right? Which is good. Yeah. But I think so half knowledge doesn't take anybody somewhere. Yeah. So people out there, some of them, not all, like there are amazing content creators who are like so amazing that they are like inspiring lot many people around the globe. So follow those kind of people. Like जो भी genre के हो आप, like for example you are तीन नाम कोई सा बताइए.
Bani J, she's crazy. Dwayne Johnson, Urmi, my coach, she's very good. And one more sir, I forgot. Deva, he's good. And Om sir, Om Shivai, he has a fitness institute. Okay. Online भी वो सिखाते हैं, offline भी सिखाते हैं. तो these are the influencers you should follow. Okay. हर एक जॉनर के एक मास्टर होता है, एंड आई थिंक सो यू शुड ऑलवेज फॉलो अ मास्टर. यू शुड नेवर गेट ट्रैप विथ somebody who's just experimenting, because they are experimenting in themselves. So if you want to get somewhere big, follow somebody who's already a big person. Yeah. You know, Yeah. because मेहनत करते 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 आपको आपकी पर्सनालिटी मिल जाएगी, पर उनकी कंसिस्टेंसी आपको इंस्पायर करते जाएगी. So I think so Beautiful. doing that is very important. Beautiful. Yeah. Nice. Lastly मेरे को एक चीज बताइए, जो लोग ये challenges लेते हैं अपनी लाइफ में, Like 30 days challenge, 100 day challenge, हाँ. 365 day challenge. So is it a part of their consistency, or do they want to just showcase the world that I'm doing something over Instagram or something like that? I think so. What's amazing is that some people out of somewhere, like for example, if we do a week challenge, okay. So in COVID actually we did. So I have a friend in Dubai. He was stuck there, and we did a online push-up challenge live. Oh, Yeah, so we did like we did not mark that. We just say कि हम हर दिन आएंगे, online आएंगे, और जो भी whomsoever wants to join can join us, and we'll do just a push-up challenge, okay? So 1 minute में कितना कर सकते हैं, 2 मिनट में कितना कर सकते हैं, like that. And it was fun. And first day, of course, 1 मिनट में हमने for example 5 या 10 ही किया होगा, तो वो it started increasing. okay. So till the day 7th, we did, I think so, without stopping, we did 50-60 push-ups. We were just doing it. Crazy. We were just doing it, Okay. smiling and doing it. We were not cranky, we were not screaming, we were just smiling and doing it. So yeah, following these kind of pattern works. Okay. Because सब जगह पढ़ा होगा आपने, बुक्स में भी मेंशन है that to reset your mind you need 21 days. Okay. Yeah. Yeah. And to make it a consistent work, I think so it is like endless. But for some people it is like 60 days. Some people it is like 75 days. Some people it is like 365 days. So depending on the nature of the person, Yeah. it can differ. For me, maybe it is like 3 months or 2 months. For you, it can be like for a month. Yeah, definitely. You know, so I think so following these kind of pattern works. Okay. Just stay committed and make sure that whatever resolutions you're going to take, like New Year is coming, you follow it around the year. Okay. Don't regret that once this 2026 gets end, 27 will about to start, and then you'll recall it and say, "Arey, मैंने resolution लिया था ये last साल नहीं हो पाया." Don't do that. So Okay. yeah, just be consistent, and I think so. There are people around you or in the gym or somewhere will help you. Okay. So reach out to those people as well Okay. to make sure that you are consistent enough. Okay. So lastly क्या advice देना चाहेंगे audience को कि क्या करना चाहिए उन्हें 2026 में to be fit? Yeah, so I think so. I'm nobody to say that, but just one advice, if I could put it out there, is that take your health very seriously. I mean, I've seen people around me, very young, of my age, older ones, suffering from many things later on. Okay. You know, because they avoided the food patterns, they did not work on their body type, they lost a lot of muscles, so now they have arthritis or obesity, PCOD, lot many things. So I think so, just sweat for a while. I mean, 20 minutes, 30 minutes, just make sure that you sweat out. Okay. It will be really good for your stress level, hormones, everything. Okay. Do it. I would just say कि अगर मेरी बातों में अगर थोड़ा भी दम लगे तो try to do this for like 3 days. 3 days में I think so you will see the mindset changing Okay. in you. You will just love it. Nice. And you will just love it. And also वर्कआउट का टाइम आई थिंक सो मॉर्निंग का होना चाहिए, कभी भी इवनिंग नहीं होना चाहिए. बिकॉज इवनिंग में जिनका टाइम होता है, बिकॉज वी हैव अ वेरी
ह्यूज वर्क लाइफ स्ट्रेस, मॉर्निंग तक बॉडी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है, और उसको अगर आप ओवर पुश करते हो तो यू वोंट गेट प्रॉपर स्लीप, तो रिकवरी टाइम जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है. सो चूज अ मॉर्निंग लाइफस्टाइल जो आपके लिए अच्छी है, एंड आई थिंक सो you deserve to give yourself the time which your body needs. So that is all. Nice. Okay, so हमने आपके लिए गेम बनाया है. Okay. आप जो मैं आपको एक लाइन या एक वर्ड बोलूंगा, आपके दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आए, Oh God, ठीक है? I'm really bad with ठीक है? this. So आपके दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आए, and it's supposed to be a one word thing, maximum 2 words. Okay. But उससे ज्यादा you don't have to explain or talk more about it. done. और ना बोलना अलाउड नहीं है. तो आपको उसके बारे में कुछ I'll ना just कुछ तो say बोलना skip. पड़ेगा. No, you Not can't even. skip. You can't I'll just skip. say skip. No, you can't. You Okay. can't skip. Okay. Ready? Yeah. Are you sure? Yeah, I think so. 100%. I don't know. Let's see. Okay. Ready? Gym on Monday morning. Monday morning. Yeah. Always fun. Leg day. Ooh, love. Skipping workout. I cry a lot. Cheat meal. Cheesecake. Protein shake. Oh, any time to go. Cardio. Lot of work. Sore muscle. I need a massage. Rest day. Rest day. Rest day. There's no day for me which is a rest day, I feel. Okay. Lastly, early morning alarm for a workout. I jump out of the bed and run. Okay, nice. Crazy. Yeah. Crazy nice. So इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी समझ आ चुका होगा, ये बंदी सिर्फ बोल नहीं रही है, इसने एक्चुअल में फिटनेस से प्यार है. Because everything that we asked to test कि एक्चुअल में she run from it, भाग रही होती है या सिर्फ बोल रही थी, बट एक्चुअल में हर चीज को उन्होंने एंजॉय किया, इंक्लूडिंग लेग डे. Come on. Leg day is favorite. I See? do two days is a leg day. Oh my god, amazing यार, amazing. नम्रता, thank you so much आपके insights के लिए and influence करने के लिए, and ये समझाने के लिए कि just sweat. Yeah, just sweat. Just sweat. And I think शायद दर्शकों को ये समझ आए, and कहीं ना कहीं मैं भी उनमें से एक हूँ जो ये अप्लाई करे Yeah. and 2026 में अपनी फिटनेस जर्नी को थोड़ा प्रायोरिटाइज करे. Thank you so much for your insights. Thank you for having me. And आप जल्दी से बताएं 2026 के लिए आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? कमेंट में जरूर बताना.